Dr. Yes. Naresh Trehan, one of India's finest cardiologists, joins us now. He's somebody who's very much leading from the front in the fight against COVID-19. A lot of people, Dr. Trehan, would say that we don't care enough about our health. People wonder whether they should get medical insurance or not. And then something like COVID happens. Going forward, do you believe that institutionally and culturally there will be an effort to future-proof our health? This is a wake-up call. Viruses are going to get more and more virulent. The environment is the one that has to actually neutralize these things that are happening around us. So like Tom Friedman said the other day, this is a war between Mother Nature and Father Greed. So if we learn our lesson well and reset our priorities, we will be able to not only live in a better world, but we will be much better prepared for our environmental dangers. So you look at, there was globalization. Globalization was massive. Countries got richer, people got richer. There was but a little invisible virus has brought the whole world down to its knees. This is a great lesson to learn, and if we forget it in a short period, we'll be suffering again. So I think that if each one of us, make sure that we participate in this war, we do neutralize the present situation, and as we move forward, we have to neutralize all the other things that have enabled our life to reach this stage. So we are saying we learn to live with very poor air quality. We did not care how we traveled. Biggest cars you could find, polluting industries, diesel being used for generators. So I think that this is all to be brought in question, on one hand, to make ourselves in a healthier environment. The other is in the protection, like you asked about the insurance. Yes, we should all be insured, because one thing that is very important is you don't know when somebody gets sick. You may be the healthiest person running a marathon, but you may be gone tomorrow because of some unknown problem that you may develop. So this is a wake-up call for sure. And we need to change our environment from the bottom up, in the sense like somebody just mentioned, sanitation. So if you look at Swachh Bharat, is already in place, but we don't practice it. Swasth Bharat is already in place, but we haven't paid enough attention and have not actually gone after it like the way we should. So I think that we just have, if we use this opportunity to realign our priorities, don't travel if you don't have to travel. Leisure will come. But this has also taught us that electronically we can conduct meetings much better than we do by traveling 2,000 miles to meet somebody, one person, two people, and then they have to talk to another 10 people from a remote, or another call or another travel. We can do a lot of our life today by not doing wasteful travel, wasteful consumption. So I think the world will be different, and we should be healthier, exercise, mental health, which is very important, and yoga being the best friend you have. Today, social distancing will become the norm, and for this period, masking and high-end hygiene will be your mantra. So there are three things, three dharmas today. Like you practice your religion, whatever it is, you need to practice this as a universal religion. Hand hygiene, masking, and social distancing. Be responsible, and we'll win this war, and corona will be defeated. डॉक्टर त्रेहन, आपने कहा कि एक छोटे से वायरस ने हम इंसानियत को इतना एक कड़ा सबक सिखाया है। सर, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है कुछ इलाकों में, कहीं पे ओपीडीज खुल रही हैं। आप जो आम नागरिक है, जो एक तरह से रश करेगा हॉस्पिटल्स की ओर, या उनकी कुछ बीमारियां हैं, क्या आप समझाना चाहेंगे उनको? तो दो बातें हुई हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब अमल हो गया है कि देयर आर कोविड हॉस्पिटल्स एंड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स। कोविड हॉस्पिटल्स जो हम सब ने बना लिए अपने से
दूर, जैसे गुरुग्राम में मेदांता, फोर्टिस, आर्टिमिस ने एक अलग ही मनेसर में कोविड हॉस्पिटल बना दिया कि सारे कोविड हॉस्पिटल्स वहां पेशेंट्स वहां जा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स नॉन कोविड हो गए कि जो लोग हैं अभी आज सफर कर रहे हैं घर पे, जिनको जरूरत है हेल्थ केयर की, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, तो उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाए बिना किसी फियर के। सो हॉस्पिटल्स सब खुले हैं, अब ट्रैवल भी के ऊपर भी रिलैक्सेशन हो रहा है, तो जो पेशेंट्स हैं जिनको जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, वो जरूर जाएं। दूसरा, हमने भी एक सीख लिया कि रिमोट टेलीमेडिसिन कितनी सक्सेसफुल है, तो कई लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उनको कंसल्टेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम दे सकते हैं। सो ये आज नया नॉर्म है। जैसे हम पहले अगर जो 100 टेलीमेडिसिन कॉन्सल्ट्स करते थे, आज के दिन 500 से ऊपर टेलीफोन कॉन्सल्ट्स हम कर रहे हैं फ्रॉम वेदांता। तो लोग भी समझ गए हैं टेक्नोलॉजी को, लोगों को रूबरू कर लेती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसीलिए हमें ये नया नॉर्म देखते हुए वेस्टफुल ट्रैवल भी खत्म होगा, पेशेंट्स की भी सुविधा बढ़ जाएगी और उनकी ट्रीटमेंट भी तुरंत हो सकेगी और हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग अननेसेसरी भी नहीं होगी। तो ये हमें सबको आगे चलना है क्योंकि कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया घर पे, कई लोगों की जान चली गई, डायलिसिस पेशेंट्स को तकलीफ हुई, डायलिसिस पेशेंट बेचारे चले गए ऊपर। तो ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, जिसको हम इलेक्टिव कहते थे वो इमरजेंसी हो गई। तो इसीलिए आज के दिन में पेशेंट्स को बिल्कुल अपने निश्चिंत होकर हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए क्योंकि अब वो कोविड को अलग कर दिया गया।